Hello everyone. In previous class, we discussed about what is the voltage regulation of the alternator and the method by using we can find out the voltage regulation like direct method and indirect method. We also discussed about what is the synchronizing torque, synchronizing current and synchronizing power and its coefficient. So in this lecture we will start unit number 5. पिछले वाली क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़े थे उससे हमारा यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो गया है, कवर हो गया है. अब हम स्टार्ट करेंगे आज यूनिट नंबर 5. So firstly we will discuss about the syllabus of unit 5 and next we will move on what is synchronous motor. तो यूनिट नंबर 3 और 4 में हमने पढ़ा था सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में और अल्टरनेटर के बारे में. अब हम डिस्कस करेंगे कि सिंक्रोनस मोटर क्या होती है, हाउ इट इज वर्क, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर. ये सब हम स्टडी करने वाले हैं. सो नेक्स्ट वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक इज कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर. आफ्टर दिस वी विल मूव ऑन द स्टार्टिंग methods of synchronous motor because synchronous motor is not a self-starting device. So we need some starting methods or techniques to start the synchronous motor. And finally the references of this presentation. So in this lecture we cover all these topics one by one. So let's start with topic 1, syllabus of unit 5. This is the third part of synchronous machine. In this unit, we will learn about what is synchronous motor, its operation, its starting and stopping of synchronous motor, what is pull-in torque and pull-out torque, motor under load power and torque condition, reluctance torque, effect of excitation, the effect of armature reaction, power factor adjustment, weaker and inverted weaker, synchronous motor as a power factor correcting device, super synchronous and subsynchronous motor, what is hunting and its minimization or elimination techniques, and the damper binding, efficiency and the losses of synchronous motor, analysis of short circuit oscillogram, determination of various transient, subtransient and steady state reactance and the time constant. Expression for transient and subtransient in terms of self and mutual inductance of the various binding. Short circuit current, equivalent circuit, single phase synchronous motor, hysteresis motor, reluctance motor, repulsion motor, stepper motor and switched reluctance motor. Firstly, we discuss about what is the synchronous machine. Actually, machine, motor और generator इंटरलेट हैं एक दूसरे से. मशीन को ही हम मोटर बोलते हैं और मशीन को ही हम जनरेटर बोलते हैं. ये पिछले वाली क्लास में भी हमने देखा था. पिछले वाले जो हमने लेक्चर कुछ देखे हैं उसमें हमने देखा था. मशीन इज कॉल्ड, पहले मशीन ही समझ लेते हैं. तो सिंक्रोनस मशीन इज अ डबली एक्साइटेड कांस्टेंट स्पीड एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस. इट मींस सिंक्रोनस मशीन में हम स्टेटर और रोटर दोनों को सप्लाई देते हैं. सो दिस इज कॉल्ड डबली एक्साइटेड. कांस्टेंट स्पीड मींस सिंक्रोनस का मींस होता है फिक्स्ड स्पीड या कांस्टेंट स्पीड, और ये एक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस होती है जो कि वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी को किसी दूसरे अदर फॉर्म में कन्वर्ट करती है. तो ये तो हो गया हमारा मशीन. Next, what is machine, motor and generator? So electrical machine is an energy conversion device which convert the energy. Motor, what is motor? Machine is called motor if it is convert electrical energy into the mechanical energy. Generator, machine is called the generator if it is convert mechanical energy into the electrical energy. ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वाली क्लास में इस चीज को डिस्कस किया हुआ है. बस आपको रिमाइंडर के लिए थोड़ा सा मैंने इस वाली स्लाइड को रखा हुआ है. Let's start with topic 2. What is synchronous motor? So first question is that
what is synchronous motor? So the definition of synchronous motor is the motor which run at synchronous speed is known as synchronous motor. अब synchronous speed क्या होती है? Synchronous speed को हम ns से represent करते हैं, where n is called the speed, s is called the synchronous. तो ns is called the synchronous speed. Formula होता है 120 f upon p, where f is equal to supply frequency जो कि इंडिया में 50 हर्ट्ज होती है और आउट ऑफ इंडिया 60 हर्ट्ज जो होती है, और p इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स होते हैं. तो इस तरीके से हम ns की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, अगर हमारे पास 4 पोल का मोटर है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो हम उसको निकाल सकते हैं सीधा ns इज इक्वल टू 1500 rpm, हमारा जो है वो स्पीड आ जाएगा. So the synchronous speed is the constant speed at which motor generate the electromotive force, or in short EMF. The synchronous motor is used for converting the electrical energy into the mechanical energy. मोटर का काम ये होता है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. सिंक्रोनस मोटर हम इसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये जो मशीन है वो एक कांस्टेंट स्पीड या फिक्स्ड स्पीड पे ही रन करती है. सो दिस इज नोन एज द सिंक्रोनस मोटर. नॉर्मल मोटर और सिंक्रोनस मोटर में यही डिफरेंस है. नॉर्मल मोटर का जो स्पीड होता है वो वेरिएबल होता है, वेरिएशन होता है, कभी कम कभी ज्यादा, बट सिंक्रोनस मोटर ऑपरेट ऑन कांस्टेंट स्पीड. Electrical motors are an electromechanical device that convert electrical energy to mechanical energy. Based on the type of input, we have classified it into single phase and three phase motor. The most common type of three phase motor are synchronous motor and induction motor. These are the AC machines. When three phase electric conductors are placed in certain geometrical position, that is in the certain angle from one to another, an electrical field is generated. The rotating magnetic field rotates at certain speed known as synchronous speed. Synchronous speed actually क्या होती है? जब हम थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन की आर्मेचर वाइंडिंग को एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है जिसको हम अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं. उसका जो रोटेशनल स्पीड होता है वो सिंक्रोनस स्पीड कहलाता है. मींस ns इज इक्वल टू 120 f/p कहलाता है. If an electromagnet is present in this rotating magnetic field, the electromagnet is magnetically locked with this rotating magnetic field and rotate with the same speed of rotational field. अब अगर हम इस rotating magnetic field जो है इसके अंदर एक किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट हम कैसे बना सकते हैं? एक कंडक्टर को जब हम सप्लाई देते हैं तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करने लगता है. सो जब हम किसी कंडक्टर को एक कोर पे प्लेस करते हैं और उसको इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है. और जब दोनों फील्ड मींस स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स और रोटर का रोटेशनल स्पीड जब एक दूसरे से सेम हो जाता है तो मैग्नेटिकली लॉक्ड हो जाते हैं दोनों, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन ऑफ मशीन. और हमारा जो रोटर है वो भी हमारा फील्ड फ्लक्स जिस स्पीड से रोटेट कर रहा है उसी स्पीड से रोटेट करने लगता है. सो द सिंक्रोनस मशीन इज कॉल्ड द कांस्टेंट स्पीड और फिक्स्ड स्पीड ड्राइव. दिस इज वेयर द टर्म सिंक्रोनस मोटर कम्स फ्रॉम, as the speed of the rotor of the motor is the same as the rotating magnetic field. It is fixed speed motor because it has only one speed, which is synchronous speed. This speed is synchronized with the supply frequency. The synchronous speed is given by ns is equal to 120 f/p.
अभी हमने देखा where n is equal to the synchronous speed in rpm, round per minute or revolution per minute or rotation per minute. F is equal to supply frequency in hertz and B is equal to number of poles. The next topic is main features of synchronous motor. The speed of synchronous motor is independent of the load. That is, the variation of load does not affect the speed of the motor. The synchronous motor is not self-starting. The prime mover is used for rotating the motor at their synchronous speed. The next, the synchronous motor operates both for leading or lagging power factor. So the synchronous motor can also be started with the help of damper winding. Next topic is construction and working of synchronous motor. The stator, every rotating electrical machine consists of three main parts. First one is called the stator, second is called rotor, and third one is called air gap between stator and rotor. What is a stator? Stator is a stationary part of the machine or a static part of the machine, and rotor is a rotating part or movable part of the machine. And every rotating electrical machine, the third part is air gap between stator and rotor. Air gap अगर नहीं रहेगा तो रोटर हमारा freely move नहीं कर पाएगा. और जो मशीन्स होती हैं उसमें दो वाइंडिंग्स होती हैं. फर्स्ट वन इज कॉल्ड द फील्ड वाइंडिंग, सेकंड इज कॉल्ड द आर्मेचर वाइंडिंग. तो मैक्सिमम जो हमारी रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन है उसमें आर्मेचर वाइंडिंग प्लेस्ड ऑन रोटर, बट इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन आर्मेचर वाइंडिंग प्लेस्ड ऑन स्टेटर. ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है नॉर्मल मशीन्स में और सिंक्रोनस मशीन में. The stator and the rotor are the two main parts of the synchronous motor. The stator becomes stationary and it carries the armature winding of the motor. The armature winding is the main winding because of which the EMF induced in the motor. The rotor is a rotatory part or movable part of the machine. The rotor carries the field winding, the main field flux induced in the rotor. The rotor is designed in two ways, that is the salient pole construction and non-salient pole construction. Salient pole का मतलब projected out rotor poles. मतलब अगर हमारे रोटर के पोल्स प्रोजेक्टेड हैं तो उसको हम salient construction बोलेंगे, और अगर वो cylindrical और राउंड शेप में है so it is called the non-salient pole construction of the rotor. The synchronous motor uses the salient pole rotor. This is the diagram for salient pole rotor. ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है इतना, जो मैं आपको लेजर लाइट के थ्रू दिखा रहा हूँ, this is the projected portion of the rotor poles. ये जो projected हिस्सा होता है इसी के कारण हम इसको salient pole construction बोलते हैं या salient pole rotor बोलते हैं. The word salient means the poles of the rotor projected towards the armature windings. The rotor of the synchronous motor is made with the laminations of the steel. तो ये जो रोटर के पोल प्रोजेक्टेड होते हैं, प्रोजेक्टेड होने से इसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है रोटर का वो कम होता है कंपेयर टू नॉन सैलेंट पोल मशीन. इसको हम हाई स्पीड पे रोटेट नहीं करा सकते, इसलिए हम इसको एज अ लो स्पीड प्राइम मूवर की तरह यूज करते हैं. सो दिस इज द स्टेटर, दिस इज कॉल्ड द रोटर, एंड सिंक्रोनस मशीन इज डबली एक्साइटेड. सो स्टेटर पे जो होता है वो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग होती है. आर्मेचर वाइंडिंग हमारी थ्री फेज है, इसलिए हम थ्री फेज वाइंडिंग आर्मेचर को थ्री फेज सप्लाई देते हैं. और रोटर पे हमारी फील्ड वाइंडिंग है. रोटर फील्ड वाइंडिंग इज ऑलवेज एक्साइटेड बाय सेपरेट डीसी सोर्स. तो यहाँ पे हमने फील्ड वाइंडिंग को सेपरेट डीसी सप्लाई दी हुई है. The lamination reduce the eddy current losses occurs on the winding of the transformer. The salient pole rotor is mostly used for designing the medium and low speed motor.
For obtaining the high speed, we can use cylindrical rotor or non-salient or round rotor type construction of synchronous motor. तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ये हम लो स्पीड के लिए यूज करते हैं या मीडियम स्पीड के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसको अगर हम हाई स्पीड पे रोटेट कराएंगे तो हमारे जो प्रोटेक्टेड पोल रोटर के हैं वो टूट जाएंगे और बाहर फेंक जाएंगे। तो इस सब को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज की मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा नहीं होती है कंपेयर टू सिलेंड्रिकल रोटर कंस्ट्रक्शन, सो इसका हम यूज करते हैं लो स्पीड और मीडियम स्पीड मोटर्स के लिए। Now the next is the working of synchronous motor. The stator and rotor are the two main parts of the synchronous motor. The stator is a stationary part and the rotor is a rotating part of the machine. The three-phase AC supply is given to the stator of the motor. चूंकि स्टेटर में हमारी कौन सी वाइंडिंग प्लेस्ड है, आर्मेचर वाइंडिंग प्लेस्ड है, जो कि थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग है। सो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम आर्मेचर वाइंडिंग को थ्री फेज सप्लाई देंगे या थ्री फेज सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। The stator and rotor both are excited separately. स्टेटर को हमने या आर्मेचर वाइंडिंग को हमने थ्री फेज सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है और फील्ड वाइंडिंग को हम सेपरेट डीसी देंगे, बट अभी नहीं देंगे। उसको कब देंगे? जब हम रोटर को नियरली सिंक्रोनस स्पीड तक रोटेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर, उसके बाद हम उसको डीसी सप्लाई देंगे। द एक्साइटेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड on the parts of the motor with the help of an electric current. When the three-phase supply is given to the stator, the rotating magnetic field develops between the stator and rotor gap. अब होगा क्या, जैसे ही हमने थ्री फेज सप्लाई दी है आर्मेचर को तो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स से क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज द नेचर ऑफ करंट इज अल्टरनेटिव। करंट का नेचर हमारा अल्टरनेटिव है, इसलिए हमें वहां पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा। क्योंकि उसका फ्लक्स, स्टेटर रुका हुआ है, आर्मेचर वाइंडिंग भी स्टेशनरी है, बट उसका फ्लक्स जो है वो घूम रहा है, रोटेटिंग है। किस स्पीड से घूम रहा है? ns स्पीड से। सो सिंक्रोनस स्पीड से हमारा वो फ्लक्स घूम रहा है। The field having moving polarities is known as the rotating magnetic field. The rotating magnetic field develops only in the polyphase system. Polyphase का मतलब दो या दो से ज्यादा फेसेस जब होते हैं उसको हम polyphase बोलते हैं। Because of the rotating magnetic field, the north and south pole developed on the stator. अब ये जो नॉर्थ और साउथ पोल डेवलप हुए हैं स्टेटर में, ये एक स्पीड से घूम रहे हैं जिसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा 4 पोल का मोटर है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो हमारा 1500 आरपीएम से जो है वो सिंक्रोनस स्पीड आ गई। तो अब हमारा जो रोटर है वो रुका हुआ है और 1500 आरपीएम की स्पीड से ये पोल जो है वो बार बार चेंज हो रहे हैं। तो रोटर में ईएमएफ इंड्यूस तो होता है, लेकिन जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, रोटर जो है ना तो फॉरवर्ड मूव करता है और ना तो रिवर्स मूव करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि स्पीड इतनी ज्यादा है हमारे रोटेट मैग्नेटिक फ्लक्स की कि वो मैग्नेटिकली लॉक्ड हो ही नहीं पाता रोटर से। तो अब उसको मैग्नेटिकली लॉक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें रोटर को भी नियरली सिंक्रोनस स्पीड के थ्रू अगर हम उसको घुमा दें तो हम मैग्नेटिक लॉकिंग पॉसिबल कर सकते हैं। The rotor is excited by separate DC source, or we can say that the field winding is excited by separate DC supply. The DC supply induce the north and south pole on the rotor. अब ये जो DC जब हम देंगे तो इससे हमारा स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। मतलब फील्ड वाइंडिंग हमारी रोटर में प्लेस्ड है, उसको हमने DC सप्लाई दी तो हमारा स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। लेकिन चूंकि रोटर हमारा घूम रहा है, मतलब रोटर को हम प्राइम मूवर से घुमा रहे हैं। प्राइम मूवर से क्यों घुमाना पड़ रहा है? क्योंकि हमारा जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका स्पीड बहुत ज्यादा है, तो 1500 आरपीएम है फॉर एग्जांपल, तो उसको हमें रोटर को कम से कम 1490 या 1495 आरपीएम तक प्राइम मूवर से पहले घुमाना होगा, फिर उसको डीसी देनी होगी। ठीक है, so as the DC supply remain constant, the flux induced of the rotor remain same. Thus the flux has fixed polarity. The north pole develops on the end of the rotor and the south pole developed on the another end. The AC is sinusoidal. The polarity of the wave change in every half cycle. That is, the wave remain positive in first half cycle
and become negative in second half cycles. So the positive and negative half cycles of the wave develop the north and south pole on the stator respectively. When the rotor and the stator both have the same poles on the same side, they repel each other. If they have opposite poles and they attract each other, this can easily be understood with the help of the figure. इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि अगर हमारा सेम पोलैरिटी रहेगी तो अपोजिशन करेंगे एक दूसरे को, और अगर हमारा अपोजिट पोलैरिटी रहेगी मींस अगर रोटर पे N है और स्टेटर का S है तो अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच में। इस डायग्राम से हम ये सब देख सकते हैं। So the rotor attracts towards the poles of the stator for the first half cycle of the supply and repels for the second half cycle. Thus, the rotor becomes pulsated only at one place. रोटर जो है थोड़ा सा बस बजिंग करता रहता है या थोड़ा सा हिलता रहता है, वाइब्रेट करता है, मूव नहीं कर पाता, क्योंकि हाँ जो पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल है बहुत ही जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं। तो रोटर हमारा ना तो फॉरवर्ड मूव करेगा ना ही रिवर्स मूव करेगा। दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए क्या करेंगे वो भी हम देखेंगे अभी नेक्स्ट वाली स्लाइड में कि हम कैसे सिंक्रोनस मशीन को सेल्फ स्टार्टिंग मोटर बना सकते हैं। The prime mover is used for rotating the motor. The prime movers rotate the rotor at their synchronous speed. The synchronous speed is the constant speed of the machine whose value depends on the frequency and the number of poles of the machine. When the rotor starts rotating at their synchronous speed, the prime movers is disconnected to the motor. क्योंकि एक बार अगर स्टेटर और रोटर के जो फील्ड है दोनों के बीच में अगर मैग्नेटिक लॉकिंग हो गई तो हम स्टेटर को सप्लाई दे के रखेंगे और फील्ड को भी हमने सप्लाई दे के रखी है, दोनों के पोल क्रिएटेड रहेंगे। एक बार मैग्नेटिकली लॉक होने के बाद जितना हमारा NS स्पीड है उसी स्पीड से हमारा रोटर भी घूमेगा, तो हमें प्राइम मूवर को कनेक्ट करने की फिर जरूरत नहीं है आफ्टर सिंक्रोनाइजेशन। And the DC supply is provided to the rotor because of which the north and south pole develops at their ends. The north and south poles of the rotor and the stator interlock each other. Thus, the rotor starts rotating at the speed of rotating magnetic field and the motor runs at synchronous speed. The speed of the motor can only be changed by changing the frequency of the supply. So this is all about the working of synchronous motor. And the next topic is method of starting of synchronous motor. चूंकि synchronous motor जो है वो self starting नहीं है तो हम कुछ टेक्निक्स के थ्रू उसको self starting बना सकते हैं। So the first method is motor starting with an external prime mover. Synchronous motor are mechanically coupled with another motor. It could be either three-phase induction motor or DC shunt motor. Here, we do not apply DC excitation initially. It rotates at speed very close to its synchronous speed and then we give the DC excitation. After some time, when the magnetic locking takes place, supply to the external motor is cut off. Very simple techniques. क्या करेंगे हम थ्री फेज सप्लाई देंगे आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर को और रोटर को प्राइम मूवर से किसी से घुमाएंगे। वो हमारा डीसी मोटर भी हो सकता है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर भी हो सकता है, उससे हम घुमाएंगे, रोटेट करेंगे। नियरली जब हमारा रोटर का स्पीड नियरली सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाएगा तब हम डीसी सप्लाई उसको ऑन करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड। And the second method is by using damper winding.
इन केस द सिंक्रोनस डैम्पर वाइंडिंग आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, अगर आप लोग इंडक्शन मशीन की स्टडी कर चुके हैं तो आपको डैम्पर वाइंडिंग के बारे में पता होगा। नॉर्मली जो हमारा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है उसमें डैम्पर बार हम यूज करते हैं, वही सेम फिनोमेना यहाँ पे भी है। सो इन दिस केस द सिंक्रोनस मोटर is of salient pole type. Additional winding is placed in the rotor pole face. Initially, when the rotor is not rotating, the relative speed between the damper winding and the rotating air gap flux is large and an EMF is induced in it. मतलब जो डैम्पर वाइंडिंग हमने रोटर पोल फेस पे एडिशनल वाइंडिंग जो फिल की है, तो हम सिंक्रोनस मोटर को एज अ इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग डैम्पर वाइंडिंग, which produce the required starting torque. The relative speed between the damper winding and the rotating air gap flux is large and EMF induced in it, which produce the required starting torque. As speed approaches synchronous speed, EMF and torque are reduced, and finally, when the magnetic locking takes place, the torque also reduced to zero. तो डैम्पर वाइंडिंग जो है वो कब तक काम करेगी, जब हमारा जो हमारी मोटर है वो इंडक्शन मशीन की तरह काम करेगी। जब NS इज इक्वल टू NR हो जाएगा, उस कंडीशन में स्लिप इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, मींस टॉर्क इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो डैम्पर वाइंडिंग का टॉर्क जो है, जब हमारी मशीन सिंक्रोनाइज हो जाती है तो उसमें डैम्पर वाइंडिंग में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है, और वो एज अ डमी वाइंडिंग या डेड वाइंडिंग की तरह यूज होती है। बट स्टार्टिंग में उसका काम है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो एज अ इंडक्शन मोटर की तरह हम स्टार्ट करते हैं, है ना, और जब हमारी स्लिप 0 हो जाती है तो उस कंडीशन में डैम्पर वाइंडिंग में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। सो दिस इज द सेकंड मेथड, बाय यूजिंग दैट वी कैन मेक द सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग और सेल्फ स्टार्टिंग। Hence, in this case, synchronous motor first run at three-phase induction motor using the additional winding, and finally it is synchronized with the frequency. Next, the application of synchronous motors. The synchronous motor having no load connected to its shaft is used for power factor improvement. Means synchronous motor also used for power factor correction, और सिंक्रोनस मोटर को हम सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह भी यूज कर सकते हैं। Owing to its characteristics to behave at any electrical power factor, it is used in power system in situations where the static capacitors are expensive. The next is synchronous motor find applications where the operating speed is less, around 500 rpm, and high power is required. For power requirement from 35 kilowatt to 2500 kilowatt, the size, weight and the cost of corresponding three-phase induction motor is very high. Hence, these motors are preferably used. Example, reciprocating pump, compressor and rolling mill, etc. इन जगह पे सिंक्रोनस मोटर का हम यूज करते हैं, या सिंक्रोनस मोटर का हम यूज वहां करते हैं जहां हमें स्पीड कम चाहिए है बट पावर रिक्वायर्ड ज्यादा है, उस जगह पे भी हम सिंक्रोनस मोटर का यूज करते हैं। This is all about the synchronous motor, its working, construction and starting method of synchronous motor. So the next topic is the references of this presentation. So these are the references of this presentation. And
Thank you for watching this video.